Good morning, ma'am. Good morning, beta. How are you? Fine, ma'am. Ma'am, how are you? I'm fine, thank you. Hello, Laiba. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Hello, Aruba. Hello, ma'am. सोई सोई आवाजें है ना? Hello, Nashra. Hello, ma'am. You beta. And who else is here? Nimra. Hello, Nimra. Hello, ma'am. Yeah. So let's give 1 minute so that we can add more students. Hello, Halima. Halima doesn't seem to have a mic. Halima, Yes, ma'am. how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. So did you practice the lab material that I uploaded? Yes, ma'am. Please spend at least 1 hour every week, rather 2 hours, because you know 1 lab credit is equal to 2 hours, right? So you practice the material every Thursday for 2 hours, just like you would do in your normal class, right? From 2 p.m. to 3:50 p.m. Okay. Acha, Elia Shafka, can you all hear me? Yes, ma'am. So Elia, maybe it's your internet. Maybe your internet is having a problem. Check your internet. Fatima Ahmer. Who is Fahad Ahmer? Okay. Mhm. So what were we studying last time? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? Ma'am, your voice is not clear. This is Elia. This is Elia speaking. अभी किसने बात की है? एलिया ने बात की मैम। तो एलिया का मुझे लग रहा है कि नेट का इश्यू है, बाकियों को तो आवाज आ रही है ना? बहुत क्लियर, यस मैम। हाँ, तो आई थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम विद हिज इंटरनेट। ठीक है, तो एलिया प्लीज try to make an adjustment with your internet. Okay. Okay, what were we studying last time? We were studying waves. We were studying waves, right? Yes. Okay, we talked about waves. कौन बोला है अभी? Sahib. Sahib. Okay, so what do you remember from the last class about waves? I remember that we discussed waves, types of waves, and mediums of waves. Okay, we discussed waves. We discussed the different types. We discussed what is a medium. So what is a medium, Sahib? Medium of wave is could be air. It could also be metal. Okay, it could be a solid, a liquid, or a gas, but then I give you an example of sound, for example, and when we are speaking normally, the medium is air, okay? Yes. What are the types? What are the types we talked about? Mainly there are like 3 types of waves, I think so. Like what? Electromagnetic waves. Okay, there are electromagnetic waves. Example is?
that needs a medium to travel. Electromagnetic waves need a medium to travel, Sahib. Yes. Do you all agree? No, ma'am. No. Electromagnetic waves do not need a medium. So give me an example of electromagnetic. Yes, ma'am. Do you Light. light? So light can travel from in vacuum as well. You know, light travels from the sun to the earth, and this is there isn't a medium. Oh, okay. Okay, so please be clear about this. So would someone else like to add something? Yes. कौन बताएगा what are the kinds of Ma'am, yes, what's your name? ma'am, electromagnetic Naam? area. Ilya, yes. मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स में एक्सरेज आ जाते हैं, लाइट्स आ जाती हैं और हीट रेडिएशंस वगैरह भी आ जाते हैं. Uh-huh. Okay. Uh, what other kinds of waves do we have other than electromagnetic waves? और कौन सी waves हो सकती हैं? Anyone else? मैम साउंड रफाकर Yes, how? मैम साउंड वेव्स हो सकती हैं इसमें. Sound is a wave, but it is not an electromagnetic wave, है ना? Sound is a mechanical wave, ठीक है? And mechanical के अंदर it is Yes, a ma'am. longitudinal wave. Longitudinal transverse पढ़ा था ना हमने? You remember? So please always, like I said, every time that you have a class, please spend at least 1 hour in the evening studying what we've done. Okay, we also talked about some terminologies. Okay, and mechanical waves are waves that need a medium to travel, okay? So we also talked about terminologies. So what are some terms that we studied related to waves? We talked about. Who would like to answer this? मैम एलिया. Ilya, yes. मैम इसमें हमने क्रस्ट पढ़ा था, वो ग्राफ के जो पीक पॉइंट पे होते हैं वेव्स उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो उससे पॉजिटिव होता है जो नीचे वाली नेगेटिव साइड्स में होता है उसे ट्रफ्स कहते हैं. Good. Or anything else? और मैम Ma'am, इसमें we studied पोजीशन. amplitude. कौन बोल रहा है? Aruba. अरूबा क्या बोला? Amplitude. What is amplitude? Amplitude, and it is the length of the wave, like from the It is what? equilibrium point to the crest or trough. Okay. The length. Amplitude होता है. इसका symbol क्या होता है? मैम कैपिटल नहीं, ए. अरूबा please. मैं अरूबा से पूछ रही हूँ. Yes. What's the symbol for the amplitude? अरूबा. अच्छा, who would like to answer? मैम एलिया इज हियर. हाँ, क्या है symbol है इसका? मैम कैपिटल ए. Capital A. Okay. What other terms do we have in the case of waves? In the case of waves, we have other terminology that we talked about in the other class. Anyone can answer this. Just tell me your name and मैम वेवलेंथ. who's this is Elia again. यस मैम. Okay, wavelength is what's the symbol? वेवलेंथ मैम लैम्डा. Lambda. And how do you define wavelength? मैम वेवलेंथ है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय all the cycles, numbers of cycles. That's not exactly. Please read this again. Okay. So anyway, what other terms did we talk about? Anyone else? Some time period. Time period, or sometimes you just call it period, and the symbol is this Capital T. capital T. Okay. So similarly, we talked about frequency. Okay. So what is the symbol for frequency? Small f. Small f. And we also talked that f is equal to 1 over t. And we also talked about v is equal to f lambda. So this was a recap of the previous class that we had.
You also know that you have a quiz coming up, so please prepare for that quiz. The quiz will be from chapter number 1. The quiz is on Monday, है ना? Monday को है ना? मैम इसमें चैप्टर 2 भी है नहीं, chapter 1 है. The quiz is on Monday. और ओके पहले डेट कंफर्म यस मैम करो. डेट क्या है क्विज की? यस मैम 29th हाँ, that's Monday. ठीक है. So please prepare quiz 1. Okay, and this is chapter 1. Okay, so this is your homework. मैम इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा क्वेश्चन बनाऊंगी तो पता चलेगा ना कितने. डजंट मैटर कितने, आपने अपनी तैयारी करनी है, टॉपिक प्रिपेयर करना है. ठीक है. नो वो मैम आपने कहा था ना कि लिमिटेड टाइम होगा इसलिए पूछ रहा वो था जितने क्वेश्चन दूंगी उतना टाइम दूंगी, बट इट विल बी ड्यूरिंग द क्लास टाइम. ओके. मैम वो ओके इंटरनेट का भी इशू होता है, इस वजह से काइंडली थोड़ा टाइम ज्यादा ही रखिएगा मैम. तो लेकिन उसमें मैं लिमिट कर देती हूँ ना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन इट फॉर 2 आवर्स, मैं आपको कह सकती हूँ यू कैन चूज 1 आवर बिटवीन दोस, विद इन दोस 2 आवर्स. समझ आ गई है? यस मैम हाँ. तो आपको अगर मैं 2 घंटे के लिए ओपन करती हूँ, लेट्स से मैं आपकी 10 बजे क्लास शुरू होती है, राइट? सो मैं अगर 9 to 11 ओपन कर देती हूँ, बीच में कहती हूँ 1 आवर चूज कर लो कोई सा. उस 1 आवर में इंटरनेट आपने इंश्योर करना है. ओके. सो हैव अ बैकअप प्लान कि मतलब एक तो ये आपका वाईफाई होगा और उसके साथ आप अपना डेटा का भी छोटा सा पैकेज कर लो, सो दैट अगर एक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरे से कनेक्ट कर लो. समझ आ रही है ना? आप सबको ये सब चीजें पता है. you've been now studying online for so long. ठीक है. बाकी इलेक्ट्रिसिटी आपको खुद पता होना चाहिए, आपने कैसे मैनेज करना है, अपना डिवाइस को चार्ज रखो. ठीक है. तो लेट्स से मैं 2 आवर्स के लिए ओपन करती हूँ एंड आई आस्क यू कि क्विज जो है ना 1 घंटे के लिए होगी बीच में से. तो आप अगर 9 बजे लॉग इन करेंगे आपकी 10 बजे बंद हो जाएगी, और अगर आप 10 बजे लॉग इन करेंगे आपकी 11 बजे बंद. बट डोंट टेक अ रिस्क टू गो टुवर्ड्स क्लोजिंग टाइम. आप कोशिश करें आप पहले वाले पार्ट में कर लें ताकि कोई इश्यू ना आए. अगर आप 9:30 लॉग इन कर रहे हैं तो आपकी 10:30 खत्म हो जाएगी. यू अंडरस्टैंड दैट? ओके मैम. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? यस. Good. Okay, right. So now let's continue with the chapter on waves that we are studying. So I'm going to share this text with you. Just a moment. You share. Where is it? This one. Okay, here. Okay, now the topic we are going to do today is known as pitch and frequency. You must have heard about this before. In reference to sound, for example, right? Sound, when we talk about characterizing a sound, we talk about, or a quality of the sound, we talk about its pitch and we talk about its frequency, right? So the frequency of the sound wave is fixed at the source. Also, you know that when you're listening to the radio, for example, you also talk about frequencies in that way. So waves do have frequencies, and we talked about that in the last class as well. So this frequency can depend on the number of oscillations of, for example, the loudspeaker that it's coming from, or the number of vibrations of a string that it's coming from. You know that when you vibrate a string, you hear a sound. A guitar is an example, right? Okay. So when we listen to a sound, we can say high, it is high or it is low, right? So these are qualities of that sound. And this is the term for this is known as the pitch of the sound. Okay. So the pitch of a note is therefore directly related to the frequency of the sound. Okay. So for example, people who are interested in music would know that there are different keys on the keyboards that correspond to different notes and different pitch and so on, and they have their own symbols, right? Anyway, so these are some, and these correspond to, from the physics point of view, they correspond to frequency. The unit for frequency, the SI unit for frequency is hertz. Although other units are also used, like for example, second inverse, because frequency we said is a inverse of time period, and the unit for time is second, so it is also second inverse, but the formal SI unit is hertz. Okay. So now there is some discussion on this. You can read about this. Now sound, for example, you know that there are certain frequencies that the human ear can detect, and there are certain that we cannot detect, of course. And this is explained over here. And
Another quality or a property related to sound is its volume. Now, just as we said, the pitch is related to, scientifically, from the physics point of view, to the frequency of the sound. The volume is related to the amplitude of the sound. So higher the amplitude or larger the amplitude, higher would be the volume. So the intensity of a sound wave is, now you have a term intensity of sound. Intensity of sound is, sound is of wave, and wave carries energy. The sound has energy. If the sound is too large, it can even break glass, for example. So it means it's very intense. So intensity is defined as energy divided by time multiplied by area. So this is energy divided by time is power. Okay, so you can also write this is power divided by area. So the formula is I is equal to P over A. So for example, this diagram shows the intensity of a wave is proportional to the power in each square meter of the wavefront. So here you have some important points related to this. You can see that the intensity of a sound wave is related to the square of the amplitude, A squared. Okay. And it is also related to the pressure, P squared, of the wave. The square of the wave's frequency, F squared, is also relevant in this case. So the larger the amplitude, the larger the intensity, the higher the frequency, the larger the intensity of the wave. So these are some relationships of these properties. The amplitude of a sound wave tells you how loud the sound is. A larger amplitude means a louder sound because the particles of air are displaced further. So here the medium is air. So we said that the particles are vibrating. So if they're vibrating with a higher amplitude, then it means it's a louder sound. And vibration means there's a mean position and equilibrium position, and the particle is moving about that position. So it can either be an up-down motion or a horizontal motion or whatever. So here we have a diagram which illustrates these concepts. So this is, for example, a sound wave. You can see that in this case, we have the amplitude is high. So amplitude, if we measure the amplitude, it is high in this case, hence this sound is loud. Okay. And in this example, for example, the amplitude is small, therefore this sound is soft. Okay. And similarly, frequency means number of cycles per second. Okay, frequency is defined as number of cycles per second. So in this case, you will see that the number of cycles per, the wavelength is larger. It means the number of cycles per second is lower, and hence the frequency is lower. In this case, you see the wavelength is less, and hence the number of cycles per second is more. You can count more number of cycles per unit time, and hence the frequency here is high. And if the frequency is high, it means the pitch is high. Okay, we just talked about this. So another topic relevant to waves is reflection and refraction of sound. So you have studied this in school, I'm sure. Can someone give me an example of reflection? Ma'am, mirror. Mirror. So mirror is an example that everyone looks at the mirror every day. And what's happening in this case? Okay, can you explain? Who answered about the mirror? Saul Rafaqat. Saul, yes. Can you explain how reflection takes place from a mirror? मैम जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो सेम जो हमारा वो इमेज होती है वो सेम जो मिरर के अंदर एक लेयर लगी होती है सिल्वर कलर की जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है हमारी इमेज को. What kind of wave is reflected in the case of a mirror? मैम नहीं पता. लाइट. अगर आप लाइट ऑफ कर देंगे तो मिरर में कुछ नजर आएगा? अंधेरे में नहीं ना नजर आएगा. सो लाइट वेव, नॉर्मली आप जिस रिफ्लेक्शन की बात करें, वन रे ऑफ लाइट कम्स, है ना, ये रे डायग्राम्स बनाते हैं ना स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, तो वन रे ऑफ लाइट कम्स, इट हिट्स द मिरर एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स एट अ certain angle, and this process is known as reflection. Reflection occurs with other kinds of waves as well, not just light. Can someone give another example? कोई और एग्जांपल? वाटर. को क्या? वाटर. मैम ये क्या बोला है अभी, मुझे समझ नहीं आई.
मैम वाटर वाटर में भी वाटर रिफ्लेक्शन वाटर नजर में, आता है। हाँ जी, वाटर में भी आपको अपना इमेज नजर आ सकता है, यस, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो सकती है। उसमें क्या चेंज हुआ है और मैम नहीं, जस्ट इको जो बेटा एक मिनट ठहर जाओ, लेट मी फर्स्ट टॉक टू द पर्सन। ये कौन बोल रहा था अभी? एलिया। एलिया। सो वाटर में जरा एक्सप्लेन करो, व्हाट काइंड ऑफ वेव इज रिफ्लेक्टेड? कौन सी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है? मैम उसमें भी लाइट ही होगा। वाटर में लाइट है, ठीक है, लाइट से आपका वो इमेज नजर आता है, राइट? अच्छा, यस मैम। वाटर की रिफ्लेक्शन एंड मिरर की रिफ्लेक्शन, व्हाट्स द डिफरेंस? क्या चीज चेंज हुई है इसमें? वेव सेम है, मैम वो लिक्विड में होता है और वो हार्ड में होता है। मीडियम से चेंज हुआ है, ठीक है ना? यस मैम। मीडियम चेंज हो गया ना? सो यस मैम। जो मिरर वाला एंगल भी एग्जांपल था, द मीडियम देयर वाज अ सॉलिड, एंड जो वाटर वाला एग्जांपल है, द मीडियम देयर इज अ लिक्विड वाटर, ठीक है? लिक्विड। यस मैम। ठीक हो गया। अब एक लड़की बोल रही थी, वो कौन थी? Who was trying to say something? मैम आमना Amna, yes. आमना What did you want to say, Amna? मैम एयर में जो इको होता है वो Yeah, साउंड वेव का एक exactly. रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन यू एम्प्टी प्लेस में जब आप बोलते Hmm. तो योर वॉइस रिफ्लेक्ट्स बैक, वो दीवारों से या इधर के माहौल से टकरा के वो वापस आती है, सो दैट इज कॉल्ड इको। Very वो good. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव Yes, होती very है। good. So an echo is an example of a sound reflection, ठीक है ना? किसी सरफेस से साउंड जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमें अपनी आवाज दोबारा से सुनाई देती है, ठीक है? सो दीज आर सम, अभी तक हमने जो बात की, वी टॉक्ड अबाउट रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? अभी तक मिरर का एग्जांपल जो हमने किया था, एको का एग्जांपल जो हमने किया, दैट वाज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का कौन एग्जांपल देगा हमें? मैम रिफ्रैक्शन में ये होता है कि एक इल्यूजन टाइप हमें नजर आता है कि वो कोई वेव, मतलब जिग जैग तो कौन नहीं बोल कह रहा है? सकते कौन बोल रहा है? साहिब। साहिब क्या बता रहे हो आप? बोलो। रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन एक इल्यूजन टाइप है, जिस तरह हम पानी में कुछ रखते हैं सो हमें ऐसा लगता है कि उसका पोजीशन कहीं और है, लेकिन वो एग्जैक्टली कहीं और होता है। इसके लिए हम ओके, क्या हो क्या रहा होता है वहां पे? जैसे हमने अभी रिफ्लेक्शन की बात की है, वी सेड द रे और अ वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड देन बाउंसेस बैक एंड रिफ्लेक्शन हो रही होती है। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा होता है? मैम आई वुड लाइक टू आंसर। नाम बताओ। आमना मैम आमना हाँ जी, बताओ आप। मैम एक मीडियम से बेंड होकर जो वेव होती है वो एक मीडियम से बेंड होकर उससे बाहर निकल के दूसरे मीडियम में जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हाँ, जैसे लाइट को अगर हम प्रिज्म में रखें तो वो एक वैसे तो वाइट लाइट इन होती है, लेकिन वो जब बाहर निकलती है तो वो 7 डिफरेंट रेनबो कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है। वेरी गुड, राइट, ओके। So this is a good example. So the main difference in this case is, okay, just a moment, इसने अभी प्रिज्म का एग्जांपल दिया, and this is a very good example and I can share this with you. प्रिज्म क्या होता है? Let's say it's made of glass, है ना? यस मैम। हाँ, इट्स मेड ऑफ ग्लास। और क्या हो रहा होता है? लाइट उससे एंटर होती है, ठीक है, अपनी पाथ चेंज करती है और फिर वो रेनबो बनाती है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ये क्या क्या नाम क्या था आपका? व्हाट्स योर नेम? आमना। आमना, यस आमना। ओके आमना, सो लेट्स आमना मैम। ठीक है बेटा, लेट मी शेयर दिस विद यू। यहाँ पे ये जो आमना ने अभी एग्जांपल दिया हमें, ये आपको नजर आ रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ? यस मैम। The यस glass, मैम। हाँ, तो ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे यू सी कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वन सरफेस, अंदर जाके उसकी पाथ चेंज हो जाती है, एंड यहाँ से जब व्हाइट लाइट एंटर होती है, व्हाइट लाइट यू नो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज।
लेकिन जब वो रिफ्रैक्शन होती है और फिर वो दोबारा से आपको वो प्रिज्म से बाहर आती है, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट होती हैं, दैट्स द रीजन वो सेपरेट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स. ईच ऑफ दीज कलर्स कॉरेस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट वेवलेंथ, एंड इसलिए आपको रेनबो नजर आती है. यही फेनोमेना जो है ये नेचर में भी होता है, और उसके इसमें प्रिज्म क्या बन रहा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमोस्फेयर में होते हैं, दे एक्ट एज अ प्रिज्म, एंड इफ द राइट एंगल पे वो अगर रिफ्रैक्शन हो जाए तो आपको रेनबो नजर आती है. मोस्टली ये बारिश के बाद ये इस तरह से नजर आती है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. So now we go back to the book. So we have some interesting examples. We've discussed it. The concept is clear and we can study further from here. So यहाँ पे you can see there's a diagram in your book where you can see this. यहाँ पे for example ये वाली wave जो है, this is the incident wave. Incident wave is the incoming wave. It strikes a surface and यहाँ पे this line is known as the normal. इस line को क्या कहते हैं? This is the normal. Normal means it's a line which is perpendicular to this surface. So when such a line is drawn perpendicular to the surface, the angle between the incoming wave and the normal is defined as the incident angle, and the incident angle in this case is represented by I. ठीक है, कुछ बुक्स में इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बुक में इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? नाउ आफ्टर after striking the surface, this wave will bounce back. And a property of reflection is that the angle of incidence and the angle of reflection, this angle, these two angles are equal. And the incoming wave and the reflected wave are in the same medium. If let's say this is air and this is glass, then the incoming wave and the reflected wave both are in air. The second concept that we studied is refraction. So refraction is taking place here. Refraction means वो enter हो गई ये wave दूसरे medium में, it passed through this जो दूसरा let's say glass था या water था, ये जो भी था. And another thing you will notice is this angle changes. ये angle और ये angle equal नहीं है, बल्कि ये change हो जाता है angle. And this phenomena is known as refraction. Okay? इन्होंने यहाँ ट्रांसमिशन लिखा है, तो बहरहाल इसको हम अगर रिलेट करें विद द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीइंग, दिस इज रिफ्रैक्शन. ठीक है, दोनों ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज अ ट्रांसमिटेड रिफ्रैक्टेड वेव. ओके, ट्रांसमिशन का मतलब है वो ट्रांसमिट हो गई, उस मीडियम में से गुजर गई. ठीक है. एंड एकोस का अभी हमने बात की थी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एको. एको इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ sound waves. Sound waves जब रिफ्लेक्ट होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सोर्स, तो यू हियर योर साउंड. अब इसकी रियल लाइफ में बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं, यू कैन रीड अबाउट दीज हियर. लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की भी अभी हमने वो प्रिज्म वाली एग्जांपल, रेनबो वाली एग्जांपल, लेकिन और भी बहुत सी वेरी प्रैक्टिकल फिनोमेना. फॉर एग्जांपल हम जो आई ग्लासेस यूज करते हैं, इनके अंदर जो लेंसेज हैं उनमें भी ये फिनोमेना हो रहा है. आपको पता है मिरर आप रोज देखते हैं, उसमें भी ये कुछ हो रहा है. यहाँ पे यू हैव एन एग्जांपल ऑफ साउंड वेव की जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होती है, और उसकी बेसिस पे जो हम सोनार बनाते हैं. ठीक है. अगेन ये मरीन कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल यूज होती है. सो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ सच एन एप्लीकेशन ऑफ. सो देयर आर मेनी 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 एग्जांपल्स, राइट? आपका कैमरा जो है, दिस इज आल्सो यूजिंग दीस प्रिंसिपल्स. द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप, दे आर आल्सो यूजिंग दीस प्रिंसिपल्स. सो अगेन म्यूजिक पूरा जो है, उसमें सारी साउंड वेव्स की एप्लीकेशंस हैं. सो these are very interesting real life phenomena that you observe, you have observed already. अब सिर्फ ये कि आप उसको साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है. एंड यू वुड नो कि जो लोग फॉर एग्जांपल म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं, दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस थिंग्स. ठीक है, चाहे वो उसको साइंटिफिकली देखें या ना देखें. Then you have the superposition of sound waves. अब ये पढ़ने से पहले I think I will take your attendance. Okay, so we have कौन आया हुआ है, let's see. Okay, Fahad. Present, ma'am. Okay, Fahad कहाँ है भला? अच्छा. We have Aisha, Hafiza Aisha. No, she's not there. Musa, Ali Musa, no. Nimra, no, this is Mahnoor. Mahnoor is not with us today. No. Then Nimra. Yes, ma'am. Okay. Then we have Nimra के बाद we have
Sayyid Azad Asad, no. Farooq Ahmed, Muhammad Ahmed Farooq, no. Muhammad Awais Khabar Gil, no. Laiba Yes, ma'am. Sahib, Present. Elia. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट साहिब हो गया, एलिया हो गया, एंड आमना, आमना अभी बोली तो थी। प्रेजेंट मैम। अशरा, मैम वो Present, ma'am. म्यूट हो रहा है। ठीक है। अरूबा, Present. एंड हलीमा इजाज, Present, ma'am. ओके। We have Nawab. Nawab is not there. Sumavi and Saul. Present, ma'am. Good. Okay, so we go back to superposition of waves. Superposition का क्या मतलब होता है? Superposition का मतलब होता है when two or more waves combine. ठीक है? And this principle is known as the superposition principle. यहाँ पे you can see कि ज़ाहिर combination of waves की वजह से भी again आपको बहुत से different effects नजर आते हैं. There are two kinds of superpositions that can that take place. One is constructive and one is destructive. So you can look at this. हम इसकी आगे बात करते हैं. For example, यहाँ पे you can see in this diagram when two waves superpose each other in such a way कि a crest overlaps a crest, तो फिर आपका resultant जो है वो बड़ा हो जाता है. This is known as constructive interference. And when, for example, a crest coincides with a ट्रफ, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है. दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस. Again, like I said, that these phenomena related to waves that we are studying are very applicable to many practical applications that you observe in everyday life. One of those applications is beats. Beats is a phenomena that that's again related to music as well. So beats, the net effect is a sound that varies in amplitude with frequency equal to the difference between the frequencies of the two original waves. The observer hears a background that pulses or beats in amplitude. So we can use this diagram to explain this. Here you have two different frequencies. So you can have some experiments also in the lab with tuning forks. For example, you have one wave of a frequency FA, थोड़ी सी फर्क है, ये frequencies बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, you can notice that. And you have another wave having a frequency FP. And when these two waves overlap or superpose with each other, at some points they will interfere constructively. You can see at some points you will see a very large amplitude, and at some points there will be a destructive interference. You will see a small amplitude. So this phenomena is called beats, which means that you will hear a loud voice, and then you will hear a low voice, and then you will hear a loud voice, and then you will hear a low voice. So the beat frequency is defined here as FA minus FP. And in this case, the background is defined by this formula. Okay, and so again, beats is a phenomena that's used in tuning of musical instruments, a guitar string, for example. So here you have different examples. And now we come to the electromagnetic spectrum that we were just talking about. Electromagnetic spectrum is the spectrum of waves that's being, let's say, coming from the sun, and it's a combination of electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other. So one of them would be electric and the other one would be magnetic, and you can see they're oscillating perpendicular to each other. And you know that the electromagnetic wave has a velocity which is given by this, and the velocity of light is a constant. As you know, it's the highest velocity that we can have here in the world, in the universe, let's say.
And this spectrum consists of different kinds of waves. You can see that the spectrum, it's a whole spectrum. So there are different wavelengths. You can see there are large wavelengths and there are small wavelengths, and these have been divided into different regions. So the large wavelength region is called the radio waves, and then it decreases, and this is called the microwaves. You know, each of these waves have their applications. Then you have infrared waves, ultraviolet waves, gamma rays, X-rays, and you can see a narrow part of this spectrum is the spectrum that our human eye can detect. This is known as the visible light. Visible light, these are the wavelengths that our eye can observe. The wavelengths beyond these cannot be observed by the human eye. And these are the colors that you see. So they start with red and then they end with blue. So it's Roig, Biv, something like that. No, so this is, okay, they have already written it, so I'm not going to write it. Okay, so you can see this is red and then yellow, and in between you will have other colors, and then it ends with blue. So this is the electromagnetic spectrum, and you have some phenomena related to wave that takes place, like we just discussed. We discussed reflection and refraction, but again we discussed superposition, and then that's also related to interference, diffraction, and polarization. This is the speed of light, and it's a constant. It's the highest speed possible. This is the formula that we studied. Velocity is equal to lambda f, and if you replace velocity by the speed of light, you get this formula. So now this is the atmosphere, and you know that the Earth's atmosphere consists of different layers, and you will see that when the spectrum, when the electromagnetic spectrum comes from the sun, it's a radiation, right? It passes through this atmosphere, and you know that ultraviolet rays, for example, are absorbed by ozone, and you also know that after absorption and traveling through here, some of them reach us. So we have ultraviolet rays B, we have ultraviolet rays C. It depends on their wavelength, and some of these waves are damaging, and therefore the first important thing is that they're absorbed here, and then the rest is we try to use sunscreens and so on to protect ourselves from these waves as well. But then there are the useful wavelengths that we need on Earth, and of course we cannot survive without them, like visible light, for example. And detection of these waves, velocity and speed of these waves, we've talked about these, and this is a table that gives you some values related to this. So I would like you to study this in the evening as well. And as we discussed, one of the properties of waves is intensity, and intensity is related to power. We just discussed a formula related to this, okay? So these are some explanations for this. And of course, you know that electromagnetic waves are very useful for communications in the form of starting from your telephone, your smartphone, your internet, as well as television, radio transmissions. So different frequencies are used for different purposes, and you can see this table here is explaining this. Okay, ठीक है? ये Yes, ma'am. FM का आपने नाम सुना होगा when you're tuning your radio channels, and FM is related to, it stands for frequency modulation. AM stands for amplitude modulation. So you can see the explanation here. And then fiber optics. Aajkal everybody is talking about fiber optics. So you can read up on this, right? So we are now going to end the meeting. Okay. So please, your homework is to prepare your quiz. Okay, for Monday. This is the 29th of March, chapter 1. The time will be the class time. A little before the class time you can start if you want. You will get 1 hour. Okay? Yes, ma'am. Okay, right. So
Good luck with your quiz. Please prepare, study, practice, and then we will meet next week. Okay? मैम एक Yes. क्वेश्चन पूछ जल्दी मैम बोलो, मीटिंग खत्म हो